Good morning, students. Now we start with theorem 7. Every subgroup of a cyclic group is cyclic. Let G be a cyclic group generated by A and let H be a subgroup of G. Then we have to prove H is a cyclic subgroup of G. The first case हमने लिया if H is G or H containing only identity element, then H is cyclic. ये रिजल्ट तो ट्रिवियली हो गया हमारा. Now we consider H be a proper subgroup of G and let X belongs to H. Then X belongs to G and G is cyclic group generated by A. So every element of G can be written as some power of A. So here we write X is equal to A raised to power T for some T belongs to Z. Since H is group, so for X belongs to H, inverse exists means X inverse exists and X inverse becomes A raised to power minus T belongs to H. Thus H contains elements which are positive as well as negative powers of A. If m is the least positive integer such that a raised to power m belongs to h, then we shall prove that h is cyclic. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि h जो है वो साइक्लिक है और हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर m जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए a रेज टू पावर m से m की वैल्यू 5 है, तो हम कह रहे हैं कि 5 जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि a रेज टू पावर 5 जो है वो h से बिलोंग कर रहा है, मीन्स उससे कम पावर वाला h से बिलोंग नहीं कर रहा है. तो हम अब क्या दिखाएं कि अगर हम ये दिखा दें कि h जो है वो a रेज टू पावर m से जनरेट हो रहा है तो h क्या हो जाएगा, आपका साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा. ठीक है, let a raised to power t be an arbitrary element of h. Now we claim that, हम क्या claim करेंगे, t is multiple of m. हमने प्रूव करना है कि t क्या है, मल्टीपल ऑफ m. अदरवाइज अगर t m का मल्टीपल नहीं है तो t को हम कैसे लिख सकते हैं, mq प्लस r, where r is not equal to 0, क्योंकि अगर r 0 हो गया फिर तो t मल्टीपल ही हो जाएगा m का, एंड r is less than m क्योंकि r क्या है, रिमाइंडर है. Since a raised to power m belongs to h, so a raised to power mq also belongs to h. This implies a raised to power minus mq belongs to h because h is a subgroup of G, so h itself is a group. Now a raised to power minus mq and a raised to power t belongs to h implies a raised to power t into a raised to power minus mq means a raised to power t minus mq, or t minus mq means a raised to power r belongs to h, which is a contradiction because we assume that m is the least positive integer for which a raised to power m belongs to h. So our assumption is wrong, so r must be 0, means t is multiple of m, means t is equal to mq. So a raised to power t is equal to a raised to power mq can be written as a raised to power m whole raised to power q. So every element of h, because a raised to power t is an arbitrary element of h can be written as a integral power of a raised to power m. Therefore h is cyclic and a raised to power m is its generator. Next theorem है, show that if G is an infinite cyclic group, then G has exactly two generators. कि अगर G आपका cyclic group तो है लेकिन वो कैसा है, infinite cyclic group है, तो उसके exactly two generators होंगे. Let G be an infinite cyclic group such that A is its one generator. मान लिया G infinite cyclic group है और A उसका एक generator है. Thus elements of G are integral powers of A because G is an cyclic group, and let it is generated by A. So every element of G is an integral power of A. Now we claim that no two distinct integral powers of A are equal. Suppose that two integral powers of A are equal. मान ली A की दो integral power हमारी सेम है, कौन सी, A raised to power R is equal to A raised to power S, where R is not equal to S, क्योंकि अगर R और S equal हो गया फिर तो A raised to power R और A raised to power S equal है ही, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो हमने क्या लिया, where r is greater than s implies a raised to power r into a raised to power minus s is equal to a raised to power s into a raised to power minus s, means a raised to power r minus s is equal to e. So order of a, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, order of a is less than equal to r minus s, which is a finite quantity. This implies infinite cyclic group has a generator of finite order. ठीक है, मींस इसके जनरेटर का ऑर्डर तो क्या आ गया, फाइनाइट है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि जनरेटर का ऑर्डर वही होता है जो ग्रुप का ऑर्डर हो. सो ए रेज टू पावर आर इज नॉट इक्वल टू ए रेज टू पावर एस फॉर आर इज नॉट इक्वल टू एस. ठीक है, सो जी हमने दिखा दिया, ये आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय ए. As a raised to power r can be written as a inverse की power minus r, so a inverse is also a generator of G. Also a raised to power m is not a generator of G for every integer m other than plus minus 1. Because if a raised to power m is generator of G,
देन A belongs to G gives, A को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि A एलिमेंट तो है ही G का और A रेस्ट पावर m जनरेटर है, तो मीन्स A कैसे हो गया, सम पावर ऑफ A रेस्ट पावर m मीन्स A रेस्ट पावर m रेस्ट पावर k मीन्स 1 इज इक्वल टू m के, यहां से 10 or 1 is equal to mk is not possible because m and k are integers, thus a and a inverse are only two generators of G. तो मीन्स अगर कोई आपका infinite cyclic group है then it has only two generators of G. ठीक है, ये इसका alternate proof, ये हमें नहीं करने की जरूरत, एक ही proof enough है. Next है every proper subgroup of an infinite cyclic group is infinite. ये अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो प्रॉपर सब ग्रुप लेंगे वो भी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा. लेट G be an infinite cyclic group and A be its generator of G. Let H be a proper subgroup of G. Since every subgroup of a cyclic group is cyclic, so subgroup H is also cyclic. Let K be at least be the least positive integer such that A raised to power k belongs to H. So H is generated by A raised to power k. If possible, let H is finite. So order of H finite है तो हमने क्या ले लिया, वो finite number m है. So A raised to power k raised to power m is equal to identity. So A raised to power km is equal to E. Thus order of A is finite. And therefore G is finite because G is क्या था आपका साइक्लिक ग्रुप जो A से जनरेट हो रहा है और A का ऑर्डर फाइनाइट है तो G का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए. लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि G का ऑर्डर क्या था हमारा, इनफाइनाइट था. तो हमने जो पोजीशन ली थी वो भी हमारी रॉन्ग हो गई. तो H कैसा हो गया, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ G. सो एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट. ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.